हेलो मैम। हेलो। हाय। मेरी बेस्ट फ्रेंड का ना बर्थडे है एंड शी लव्स डायमंड्स। तो कुछ जबरदस्त दिखाएंगे। श्योर। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे अमृता सिंह की। अमृता सिंह है एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जो कि अब रिटायर्ड हो चुकी हैं और उनकी बेटी सारा अली खान आजकल मूवीज में हमें नजर आती हैं। लेकिन अमृता सिंह की लाइफ कैसी रही है, उनके और सैफ के क्या सिचुएशन थी, क्यों उन दोनों ने डिवोर्स लिया। अमृता सिंह ने अपने से एक छोटे एक्टर सैफ अली खान से शादी की थी और वो शादी ना टिक सकी, क्यों टूट गई, आज हम सबका खुलासा करेंगे। So Amrita Singh was born on 9 February 1958। वो पैदा हुई थी और वो थी वो थी बेटी रुखसाना सुल्ताना की। रुखसाना सुल्ताना जो कि एक पॉलिटिकल एसोसिएट थी संजय गांधी की ड्यूरिंग द 1970s इमरजेंसी टाइम। तो अमृता सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने अपना डेब्यू किया था मूवी बेताब से और इसी तरीके से उनका करियर काफ़ी अच्छा चला। सबसे पहले उनका अफेयर जो है वो सनी देओल के साथ हुआ, जिनके साथ उनका डेब्यू हुआ था। लेकिन बहुत ही जल्द वो दोनों अलग हो गए क्योंकि अमृता सिंह को पता चल गया था कि सनी देओल ऑलरेडी मैरिड है। उसके बाद अमृता सिंह की ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग आए, जैसे कि विनोद खन्ना और रवि शास्त्री और फिर सैफ अली खान। क्योंकि अपना दिल हार बैठे थे तो वो अमृता सिंह से मिलना चाहते। तो सैफ अली खान ने अमृता सिंह को कॉल की और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो इस पे अमृता सिंह ने उन्हें मना कर दिया, मगर कहा कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिल सकते हैं, तो मेरे घर आ जाओ डिनर। और जब सैफ अली खान उनके घर पहुंचे तो दोनों की आपस में बातें हुई। एट द एंड ऑफ द डिनर दोनों ने एक दूसरे को किस भी किया और फिर सैफ अली खान वहां से कभी गए ही नहीं और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। उनकी मदर जो है सैफ अली खान की, वो पहले से बहुत नाराज हुई और खिलाफ थी इस रिश्ते के, पर बाद में वो सैफ अली खान और अमृता सिंह को बच्चे हुए, सारा अली खान एंड इब्राहिम अली खान। एंड उसके बाद दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। कहते हैं इस खटास का रीजन था कि सैफ अली खान ने अमृता से बहुत बार चीट किया। मगर सैफ अली खान का ये कहना है कि अमृता सिंह बहुत वायलेंट थी, उन पे गुस्सा करती थी, उन्हें उन्हें एक बार पैन से भी मारा था उन्होंने। और वो उन्हें और उनकी माँ बहन को गालियाँ देती थी, उनके करियर के लिए उनको बातें सुनाती थी कि वो सक्सेसफुल एक्टर नहीं है। और ये सब बहुत सारी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से जो है उन दोनों के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। फिर सैफ अली खान जब अमृता सिंह से अलग हो गए तो बच्चे अमृता सिंह के साथ चले गए और सैफ अली खान डेट करने लगे एक इटालियन मॉडल को, रोज़ा। और इन दोनों का अफेयर भी कुछ अरसे तक चला, मगर बहुत जल्दी वो भी टूट गया। और उसके बाद सैफ अली खान की लाइफ में आई करीना कपूर। तो करीना कपूर के लाइफ में आने के बाद, क्योंकि करीना कपूर का ब्रेकअप हुआ था उस वक्त शाहिद कपूर से, तो उसके बाद दोनों ने डेट किया। सैफ अली खान और करीना कपूर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। सैफ अली खान ने बाकायदा करीना के नाम का टैटू भी करवा लिया अपने हाथ पे, जो कि उस जमाने में बड़ा वायरल हुआ था। अमृता सिंह की जहाँ तक बात करें, उन्होंने काव्य अंजलि नाम के सीरियल में एक्टिंग की, कलयुग मूवी की, ठीक है। लेकिन वो बस स्ट्रगल ही करती रही अपने बच्चों को पालने के लिए। बट हाँ, जो है उसके बाद करीना और सैफ की जब 2012 में शादी हुई तो अमृता सिंह ने अपना दिल बड़ा करते हुए अपनी बेटी को तैयार करके उनकी शादी में भेजा। उसके बाद से इनके रिश्ते बहुत ही स्मूथ हो गए। अब सारा अली खान और इब्राहिम अली खान बड़े हो चुके हैं। सारा अली खान तो एक्टिंग फील्ड में भी आ चुकी हैं, इब्राहिम भी अपना डेब्यू करने वाले हैं। और अमृता सिंह एक पीसफुल स्पेस में है। वो कहीं ना ज़्यादा आती हैं ना जाती हैं, बस अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। और जहाँ तक बात करें सैफ अली खान की, तो वो खुश हैं। करीना कपूर और उनके भी बच्चे हो चुके हैं, जैसे कि तैमूर अली खान और उसके बाद जहांगीर अली खान। तो अब जो है वो दोनों दोनों फैमिलीज बहुत सेटल्ड हैं, बहुत पीसफुल हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात तो माननी पड़ेगी
कि जिस तरीके से अमृता सिंह ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है, बड़ा दिल उन्होंने दिखाया है और सैफ अली खान के साथ अपने बच्चों को, मतलब वो करीना के साथ भी सारा की बॉन्डिंग है, इब्राहिम की बॉन्डिंग है, और ये तभी हो सकता है जब उनकी माँ अलाउ करे। तो ये अमृता सिंह के तरफ से एक बहुत बड़ा जेस्चर देखा गया है कि उन्होंने ये जेस्चर दिखाया है। बाकी अगर बात करें कि अमृता सिंह को सैफ अली खान ने पहले काफी दफा बॉडी शेम भी किया है, जिसकी क्लिप अभी आप ये देख सकते हैं। This ideal happy scenario kind of picture in my mind, and marriage was a very integral part of that scenario, that picture that I had in my mind. And I think when I wanted to have children, I felt that my children would need me more than my job would. And do you think that you really neglected yourself after your marriage? Yeah, I think I became complacent and I just became lazy. Why? Very lazy. You know, somebody once told me that women have this great urge to nestle. And, you know, I just started looking like a fat ostrich in her nestle, in her nest. So you think that you were just happy, so you just let yourself go? Yeah, I was just because happy and I was just like in La La Land, I think. And I was just oblivious khao, about, piyo, jiyo. खाओ पियो जियो बस ऐश करो सो बच्चे हैं और क्या चाहिए लाइफ में. लेकिन So it कहते became हैं like कि you that. know when you're married to a star, it's like you're sitting on a time bomb, a ticking time bomb. Do you agree? I mean, after all, they're surrounded by all these beautiful women. They're going to these outdoor locations, and everything's looking so glamorous, so sexy, so pretty. It's a Well, way. that must be for a, you know, traditional or conventional star wife. I was a star before I became a star wife. So I didn't have that insecurity that I had to keep up with the Joneses in any way. And I in my guess there's marriage. love and there's trust and there's happiness. Yeah. And Yeah, that basically, yeah. matters. You get lazy and you get complacent, so you can, you know, make it sound romantic and say it was love and trust and all that. But bottom line is that you just get lazy and, you know, you've been there and you've done it and you just, it doesn't excite you. I mean, it never really excited me to go and sit in a beauty parlor for 5 hours. But you I never do wanted that to- because it's my job. Yeah, but I you have were to a do star, that. then you became a star wife. Did it never But then that's what I said. I was a star before I became a star wife. So I was through with that. I mean, I was always going to be what I was. The way I dressed, I thought didn't really dictate what I was. It wouldn't, if I lived in a kaftan, that wouldn't take away from me that I was Amrita Singh. I was, am, and will always be Amrita Singh. You know, good, bad, and different. Yes, but I did become complacent and lazy about the fact that you have to, you know, look your best all the time as a woman, not just as a star wife. And Saif As never a woman. demanded it from you. No. Saif was never a very demanding husband. He never said, honey, if you don't want to look good for yourself, that's fine. Look good for me. Oh yeah, of course. Like, yeah, he did do that. Yeah, I'm sure he did. Yeah. And what, he pushed you into getting into the gym and you know, give you inspiration. Yeah, he did. Incentives. He did. Yeah, he did. He did very often. But you know, I'm the kind of person who has to feel it for myself. Nobody can make me do anything. Anything. I mean, large portion of your time you have spent being insecure. Well, not a large time, but yeah, time enough to damage my mind. Yeah, I have. Insecurity is a huge part of being a star wife. And as a star, you're not insecure because you're the one who creates the insecurity then. Well, you're back to being a star again, you know, from तो जैसा कि अभी तक आपने देखा, इस इंटरव्यू में अमृता सिंह बता रही थी कि कैसे वो अपनी लाइफ में कंप्लेसेंट हो गई थी और कैसे वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी और उन्होंने वेट गेन किया था और वो जो है अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, मगर सैफ अली खान उनको बार बार कहते रहते थे कि यू शुड गो टू द जिम। वो हो सकता है अच्छे के लिए मोटिवेट करते हों, बट इनसिक्योरिटी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा डाल दी गई थी। इनफैक्ट कि जो है वो ज़्यादातर जो है इनसिक्योरिटी में ही उनका माइंड डैमेज हुआ। उन्होंने ये भी बताया और ये भी बताया कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, वो नहीं काम करना चाहती थी, वो सोचती थी बच्चे हो गए हैं और क्या चाहिए, बट उनको काम इवेंचुअली करना पड़ा है आफ्टर दिस डिवोर्स, बिकॉज वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहती हैं, मेंटली स्टेबल रहना चाहती हैं। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी बातें की पूजा के साथ, जिनके साथ वो इंटरव्यू दे रही थी जूम को, और अभी देखते हैं आगे क्या कहती है। You know, you can't have your cake and eat it too in life. I've discovered that. There are no free meal tickets in life. I've discovered that as well. Do you think that your divorce was the worst crisis you have ever faced in your life? No. The worst crisis of my life was losing my mother. That was the worst crisis because that's the only
identity, and that's the only pillar that I've really had in my life. I had no other family other than my mother. I come from a broken home and I have no siblings. And I only live with my mother. And I lost my mother at a very crucial time in my life. And losing her was a huge blow. And then when Ibrahim was born, he got very unwell. And that was the second nasty blow in my life. So my divorce comes much low down in the priority list of shocks. अमृता, इतने गंभीर पर्सनल क्राइसिस के टाइम आपने ये मैं चुप रहूंगी एटीट्यूड क्यों अडॉप्ट किया? आई मीन आफ्टर योर स्टार, Saif is a star, there's so much media interest in your lives, and you just haven't spoken up at all about what really happened, how you took it. Why? Because so much was being done and said so openly that, you know, what was I going to endorse? What would I Just gain? your perspective, or maybe a hurt or pain, or just something from your side. That's my personal emotion. I don't need to share it with anyone. I didn't feel the need to share it with anyone. I had other things that needed my priority, like my children. And most important, myself. I needed to deal with myself. And people like the media and, you know, curious people were not on my priority list at that time. My children and myself were. Well, I think it's wonderful then that you have. I needed a job after, you know, what happened in my life. I needed a job. I needed something to give me the mental and the financial stability. I have 2 kids. And I didn't want to just sit at home like a loser. And I decided to get back to a job. And this is the only job I know. So you're not doing it because you love it. You're doing it because you have to do it. Yeah, I'm doing it more because I have to do it. But I mean, I love my job. But I'm happier being Hours you lazy. have to put into it. I'm basically a lazy person, so, you know, I would love not to do anything, but you cannot not do anything in life, which was my complacent stage, and I have to be rid of that stage. So basically you're saying you're a lazy person, given a chance to just be happy. So you don't really regret the self-imposed exile no. from acting. Not at all. Because like I said, शादी करना भी एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है मेरे ख्याल में, हर औरत के लिए. मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी था. And it's been a wonderful experience to have been married, and I've got 2 beautiful children. So I have no regrets about not working. I got a lot more in return for those 12 years that I didn't work. But how easy was it for you to make a comeback? Actually, really easy. Actually, really easy. And I think that's because we are from this fraternity that's very supportive of its family. The film fraternity and the media fraternity एक बहुत बड़ा परिवार है, और अगर आप एक बार इस परिवार के सदस्य बन गए हैं, they'll always give you work. There's so much that I've missed out on, or so many people that are better at so many more things. Yes, in a way, maybe. Yeah, but you know, you don't have to just like miss out on every aspect in life just because you're not facing the camera. I don't think I had that problem. I don't think I really stagnated much. I did grow in my time when I was not working. I just grew in different avenues. So what are the immediate things that you required for your comeback? I had to work on how I looked. I was about maybe 15 kilos fatter than I am right now, about 7-8 months ago. First, I had to deal with my mental state of mind. Then I had to deal with my physical being. How did you help your mental state? I had to overcome everything that I was going through very fast because I didn't want my children to grow up feeling that they were left with the loser parent. And you know, parent? That, you know, I just stayed at home and just mulled over my situation and, you know, just stayed fat and complacent and unhappy because of my circumstances. I didn't want my children to grow up learning to be, you know, defeated in life by a situation. You wanted to be a role model for them. Well, I don't know if I wanted to be a role model for them, but I think I needed to do it for myself first, and I'm glad that I did it because inadvertently it has been work like a role model for my kids because they've seen that life's not really over, you know. When very traumatizing things happen to you, sometimes better things can come out of it, you know. Amrita, आप फिर से जब काम करने लगे, your children must have got the shock of their lives, right? क्योंकि इतने दिन से आप घर पे हैं. So how did they react to your suddenly departing early in the morning and coming back late at night? Well, I think initially they felt कि घर हमारा है और कुछ माँ नहीं है देखने के लिए, कुछ भी करो. But फिर then it slowly dawned on them that it's not just a, you know, one-off holiday. It's a permanent
scenario now where Amma is not at home for many hours and for many days in a month. It's taxing and it's trying because both my children are small, and I think children need you around, you know. Yeah. इब्राहिम इज़ बहुत छोटा है, 4 साल का है, और मुझे लगता है उसको माँ की बहुत ज़रूरत है, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं उसे वो वक्त नहीं दे सकती हूँ जितना मैं उसे देना चाहती हूँ. सारा भी अब बड़ी हो रही है, उसे ज़रूरत है कि उसकी माँ रहे, लेकिन मैं नहीं रहती हूँ कभी. लेकिन क्या करें, सच इज़ लाइफ, यू नो. यू कांट, and it's fine, children grow up. But how do you explain it to them? Well, I explain it to them that, you know, Jan, Amma has to go and work because Amma has to look after herself. And if she can't look after herself, she can't look after you. Tell me something, Amrita. When your marriage was breaking up and you had this whole vision in front of you, of, oh my God, my life, no husband, 2 kids, did you really think that you would have the strength in you? Well, no, I think I was hurt. I was very hurt. I didn't think of other issues at that time. I had to first deal with my emotions as a woman. And then thereafter, everything just fell into place. I think as a woman, I had to just deal with the fact that you win some and you lose some. And this was, you know, just not destined to be. And once I accepted that, everything fell into place. But just the fact that you know now you have to go out there, you have to earn your money, you've got these 2 little kids, you've got to be the single mom. Didn't the thought ever scare you? No, it doesn't scare me at all. Because till I'm alive, I know I'm capable. And these things don't scare me. I mean, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नहीं बने तो बेच बाच के सब बैठ जाएंगे कहीं छोटे से घर में, खाना पीना तो मिल जाएगा, जी लेंगे. I'm not worried about So you get the things strength like of the fact you come from a divorced family. Yes. Your mother brought you up single-handedly. Yes, single-handedly and brilliantly at that. So you have learned from example that this is possible and that it's possible to do it yes, well. totally, and with a lot of comfort and so it's actually, this transition hasn't really been very difficult for me, other than maybe emotionally. It's not really been very difficult for me, no. The new direction, you know, your life is taken up. बहुत ही खुश है. हाँ, कुछ तरह से तो बहुत खुश हैं और कुछ तरह से नहीं है, और वो तो जिंदगी में हर मोड़ पे ये होता है that there are some aspects that are totally fulfilled and some that are not. आप किस चीज की कमी महसूस करती हैं? समय की, अपने बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा. मुझे उसका बहुत दुख है कि मैं उतना वक्त नहीं दे सकती अपने बच्चों को. क्या वो आपके सेट्स पे आते हैं? हाँ, बहुत आते हैं. एंड आई हैव नो प्रॉब्लम्स अबाउट द फैक्ट कि अरे उसके बच्चे सेट पे बैठे रहते हैं ऑल दैट. तो क्या है, मेरे बच्चे अब मैं दिखते नहीं है तो मैं कहाँ मिलूँ फिर. आई वर्क सो मेनी आवर्स. So I don't mind. I love my kids coming on my sets. Are they really proud to like show off in school now? Oh yeah, now Sarah does. Like Sarah, I know at times used to be really embarrassed when I was like all of size 16 and fat. I could see that my daughter was embarrassed and, you know, that, oh, my mother's such a motalli, and, you know. But today I can see, you know, there's a sense of pride in my daughter's eyes. क्या आप दोबारा शादी करेंगे? पूजा, मैं 16 साल की तो हूँ नहीं कि मैं बोलूँ हाँ पता नहीं या शायद या नहीं. Quite honestly, I don't think so. But you never know. Why would you say so emphatically? Because I have everything that a man can give me, actually, other than a few things, which I don't need to be married for, I would believe. You know, and no, that's very naughty. No, shush. That's lovely. अच्छा, आप ये बताइए कि अगर आपने शादी दोबारा की तो क्या आप वापस अपने करियर को छोड़ देंगी? नहीं, इसीलिए शायद नहीं करूँगी. So that I know I don't have anyone paying my bills for me and I have to stay in my job. You know, Amrita, Eleanor Roosevelt once said, she said, a woman is like a tea bag. You can test her strength only when you put it in hot water. And you, my dear, seem to be made of the strongest Assam brew. Okay, is that the best that you get in the market? That's the strongest. Great, thanks. That's a compliment. Yeah, that is a compliment, Amrita. And I think that you have been extremely inspirational for a lot of women out there. A lot of women, you know, will be inspired to say, hey, listen, if Amrita Singh, 2 kids, lazy as can be, can get back on her feet. Totally. Today, I wouldn't have life back in any other way other than this way. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस इंटरव्यू से आपको अमृता सिंह की बहुत सारी बातें पता चली, बहुत सारी उनकी सिचुएशन का अंदाज़ा लगा. ये इंटरव्यू जब आया था तो उनके बेटे इब्राहिम अली ख़ान सिर्फ 4 साल के थे और उन्होंने बताया था कि कैसे वो
जो है वो उनको टाइम देना चाहती थी अपने बच्चों को, मगर उनको अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू हर डिवोर्स उनको काम करना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे ज़्यादा बुरा उनके साथ उनका डिवोर्स नहीं, उनके साथ उनकी माँ का गुजर जाना हुआ था, बिकॉज़ वो एक सिंगल मदर की बेटी थी और फिर उनको भी दोबारा से सिंगल मदर बन। एंड शी ऑल्सो मैंशन कि हर मदर वॉज हर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि जब उनकी माँ गुजर गई तब उनका दुनिया में बस उनके बच्चे ही थे जिनके लिए उनको सब कुछ करना पड़ा दोबारा से। और बाकी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि फिटर्निटी में वापस आने के लिए उन्होंने कितना कुछ किया, उन्होंने अपने आप को दोबारा से शेप में लाया दोबारा से, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके उनके बच्चे उनसे कुछ सीखें, वो ये देखें कि उनकी माँ एक लूज़र नहीं है, एक विनर है और वो दोबारा से कमबैक कर सकती हैं। और उन्होंने कमबैक किया भी। काफ़ी सालों तक वो काम इस तरीके से करती रहीं और उन्होंने बताया कि मुझे अब किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है और दोबारा शायद मैं शादी ना ही करूं। बट शी ऑल्सो सेड नेवर से नेवर। बट आज तक वो अपनी बात पे कायम है। सारा अली खान बड़ी हो चुकी हैं, एक्ट्रेस बन चुकी हैं, इब्राहिम अली खान डेब्यूट करने वाले, मगर अभी तक वो उन्होंने एक्टिंग भी, फ़िलहाल एक्टिंग से ब्रेक लिया हुआ है। और इसके अलावा वो जो है अभी तक शादी भी उन्होंने दोबारा नहीं की। लगता है कि वो अपनी इस ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ अब बहुत कंफर्टेबल हैं और वो दोबारा से शादी वगैरह के मसलों में नहीं पड़ना चाहती। ये है ज़िंदगी अमृता सिंह की, जो आज मैंने आप लोगों से शेयर की, आप लोगों को बताई। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत कुछ पता चला होगा और इससे ये भी पता चलता है कि एक औरत की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होती है। अगर वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकती है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मज़ा आया ये वीडियो देखने के बाद तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।